तो जब लोग अपना काम शुरू करते हैं सर्विसेज का, जनरली द फर्स्ट थिंग दे आस्क फॉर हेल्प विद इज सेल्स। वो कहते हैं हमें काम ढूंढते हैं, या हमारे पास कुछ कुछ काम है, कभी कभी आता है तो हम कंसिस्टेंटली काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू नो, व्हाट कैन यू डू टू हेल्प अस विद दैट? एंड ऑफ कोर्स, probably one of the lowest hanging fruits when somebody joins Allied is that Allied has I think well over 100 current and past customers, recent past, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे relationships हैं, जो large customers हैं with a lot of needs। तो हमारे यहाँ भी जो account managers हैं वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसी चीज़ें जो वो जाके मज़ीद customers को sell कर सकें। So the first thing I think you get is basically access to large customer base, जिसमें से काम के निकलने का मार्केट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इम्कान होता है। इसके बाद जो लोग टिपिकली करते हैं, या इससे पहले समटाइम्स व्हेन दे आर स्टार्टिंग ऑफ इन दिस बिजनेसेस, दे गो टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। दे will reach out to uncles and aunties abroad, or they will reach out to friends who have immigrated, yeah, friends of friends and ex-colleagues and all of that, और उनको वो बताते हैं कि जी हमने अपना काम शुरू किया है, तो बस कोई काम है तो बता दें, etc. And that's definitely where you want to start. हमारी sales team can coach and advise in that, help expand and activate those networks. But there comes a point कि जब ये networks जो हैं exhaust हो जाते हैं. I mean, I think the data is this: everybody has like about 100 friends uh, on their social media profiles. That's the average, and of those, very few are in a position to give you any sort of work, and of those, very few are interested in doing that, given your position and their position, etc. So थोड़े से ही निकलते हैं, that's very normal. At some point they get exhausted and you need to go seek, find new customers. So one of the things Allied में sales की team जो offer करती है वो market research है. So market research के decks हैं, this is an example. They kind of walk you through the who, what, when and how of what to sell and how, who to sell to. So it talks about किस टेक्नोलॉजी में आपको काम करना चाहिए, आपका कंपटीशन क्या कर रहा है, किस इंडस्ट्री में आपको अपनी एफर्ट फोकस करनी चाहिए, पैसा कहाँ घूम रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन से सेक्टर्स तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, वहाँ आपका फोकस होना चाहिए, कौन से सेक्टर्स पैसे आईटी में ज़्यादा खर्च रहे हैं, किन सेक्टर्स में फंडिंग ज़्यादा है, किन लोकेशंस पे फंडिंग ज़्यादा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दिस अ होल बंच ऑफ थिंग्स जो हमारी रिसर्च की टीम कॉन्स्टेंटली चेक कर रही होती है, और वो डेटा कलेक्ट करके नंबर्स क्रंच करके पब्लिश करती रहती है to the rest of the company where people are trying to run campaigns. And all this obviously helps you get a very good understanding of the market that you're operating in, and that makes your sales campaigns efficient. The other thing that's commonly asked for is product strategies. A lot of people who come in जो कहते हैं कि मैं फाइनेंस का एमबीए हूँ, या मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोई स्पेसिफिक काम करता हूँ, तो बट लेकिन अब मैं जब पिच करने लगा हूँ इन दी आउटसोर्सिंग मार्केट, तो प्रोडक्ट और मार्केट का एक फिट रिक्वायर्ड होता है। टिपिकली पीपल कैन डू अ होल नंबर ऑफ थिंग्स, दे जस्ट डोंट रियलाइज कि उनमें से कौन सी है जो आउटसोर्सिंग के लिए सूटेबल है, या जिसकी नीड आउटसोर्सिंग मार्केट में इस वक्त ज़्यादा है। And so that product market fit is something the sales team can help with. Once that is established, then really the next step is कि अब आप outbound lead campaigns जो हैं वो start करें। यानी कि अब आपने कस्टमर जो हैं उनकी लिस्ट्स बनेंगी, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको फिर अप्रोच किया जाएगा बाय ईमेल और कॉल्स और whatever. This is a subject in itself, and it has outbound components and it has inbound components, and the sales team is very focused on this. Without going into too much detail of this, the bottom line of it is कि आपके काम से रिलेटेड जितने भी लोग हैं मार्केट में, उन तक आपको अप्रोच दी जाए, उनके साथ आपकी कोई मीटिंग्स वगैरह सेटअप कराई जाएं, ये इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है।
कि आपकी एक के बाद एक रेलेवेंट बंदे के साथ मीटिंग कराते चले जाएं, बिकॉज उसमें से फिर काम निकलने का इम्कान है। जब किसी के साथ मीटिंग हो जाती है, यूजुअली दैट डज नॉट मीन कि अब वो इमीडिएटली आपको काम दे देगा। ये बहुत बारी होता है कि बहुत अच्छी मीटिंग हो जाती है लेकिन उसको इस वक्त ज़रूरत नहीं होती, तो आपने 3 4 5 महीने उसके साथ राब्ते में रहना है। और जब 100 150 बंदा इस तरह का हो जाता है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इतने सारे लोगों के साथ सॉर्ट ऑफ ब्लैंड सी कॉन्वर्सेशंस मेंटेन करते हुए। अब वहाँ पे टीम में जो लीड नर्चरिंग की और क्लोजिंग की एक्सपर्टीज़ है वो काम आती है, जहाँ आप उनको एक लिस्ट ऑफ कस्टमर्स दे देते हैं एंड दे कीप वर्किंग ऑन देम till such time that they actually give you any sort of business. This is generally the stage at which a lot of people give up the chase, and this is really important. This is the difference between getting a 10% closure rate and a 2% closure rate. So nurture and close का एक practice है within the sales team. Of course, you when you join Allied, you also get to say to customers कि you are a multi country company. हमारे यूएस में ऑफिसेज हैं, दुबई में है, पाकिस्तान में है, और अब ऑस्ट्रेलिया में नया खोला है। और 24/7 स्विचेस हैं, कस्टमर कॉल करता है, कॉल राउट होके आप रिप्रेजेंट हो जाते हैं सब जगह। सो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के एक इंडिविजुअल से आप सडनली एक मल्टी कंट्री, मल्टी जुरिस्डिक्शनल, लोकल टू द कस्टमर परसेप्शन दे सकते हैं, जो कि आपके क्लोजर के रेट्स को बहुत इम्प्रूव कर देती है। सेल्स की टीम पार्टनरशिप्स बिल्ड करती है, मेंटेन करती है कॉन्स्टेंटली। सेल्स के अंदर बिल्ड करती है, बहुत सारे सेल्स के हमारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू काम आता है, वो पार्टनरशिप्स हैं। और बहुत सी डिलीवरी की पार्टनरशिप्स हैं जिनमें काम आता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स इज़ कि आप कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, आपको रैंडमली और अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। उनमें से कुछ, बल्कि बहुत सी 70-80% काम जो यूएस में पब्लिश होता है वो यूएस के लिए ही पब्लिश होता है। तो आप यूएस के कस्टमर को यूएस में कंसल्टेंट ढूंढ के दे सकते हैं, अगर आपका वहाँ नेटवर्क हो, जो कि यूजुअली लोगों का नहीं होता। सो द सेल्स टीम एक्चुअली हेल्प्स build out and or has existing networks that you can use to improve your fulfillment ratios. Those obviously mean big money in the long run. जब आप कस्टमर साइन अप कर लेते हैं, तो समटाइम्स जिन लोगों ने कस्टमर अक्वायर किया होता है वो उसमें ज़रा हैंड्स ऑफ सी अप्रोच लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा कस्टमर है तो इसका मैं एक अकाउंट मैनेजर बना के मैं पीछे हट जाऊं और यही चलाता रहे उसको, वही देखे इसकी डे टू डे प्रॉब्लम्स और इसकी एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स और कस्टमर को खुश रखना एंड मेकिंग श्योर कि इसमें से मज़ीद काम निकलता रहे। इसके लिए अकाउंट मैनेजमेंट एक अलग प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, जिसके अंदर आपको डिफरेंट options दे सकते हैं on how to engage and expand existing accounts. They're very specialized in that. Um, Similarly, the if you have an existing customer, the sales team can help you identify कि और कौन कौन सी opportunities हैं जो हमारे network में exist करती हैं, जिनको कि आप बेच सकते हैं अपने existing customers को। So मैं अगर कहीं जाके कस्टमर के साथ PHP का काम कर रहा हूँ, तो सेल्स की टीम आपको गाइड कर सकती है कि देखो यहाँ पे ये 3 4 चीज़ें अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, मसलन कि जी बहुत सारे सिस्टम्स हैं कस्टमर के पास, तो वो बहुत सारे सिस्टम्स जो कस्टमर के पास हैं इंडिकेट कि यहाँ कोई इंटीग्रेशन का काम होगा और ये इंटीग्रेशन की टीम ये बैठी है और इनके साथ आप मिलके ये काम कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सो ये वाली अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सो ऑब्वियस to you and sometimes not well communicated to customers. The sales team can help you engage on that. Um, each practice we have has उसकी वसादत से you get access to a community. So सेल्स की टीम जो है उनके पास ग्रुप्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, प्रायर कॉन्वर्सेशन हैं, रिलेशनशिप्स हैं विद फॉर एग्जांपल सेल्स प्रोफेशनल्स इन लाहौर। सो अगर आप अपनी टीम के लिए सेल्स का कोई बंदा हायर करना चाह रहे हैं, तो सेल्स की टीम पहले हज़ारों लोगों से मिल चुकी है जो लोकल नेटवर्क में हैं, और उनसे कई से वो बात कर चुके हैं, कई शॉर्ट लिस्टेड हैं, उनकी मीटिंग के नोट्स पड़े होते हैं कि इस टाइप का बंदा है। सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट।
We have existing clients obviously that you can access. We have groups and forums for Pakistani expats abroad. They are very likely, more likely to give you business than any other group of people abroad. Um you have chambers of commerce and uh, regional expat communities. ये सारी बहुत असिस्ट करती हैं इन इंश्योरिंग कि अल्टीमेटली आपका जो न्यू फाउंड बिजनेस है उसको बहुत उसके पास काम आने के बहुत सारे मुख्तलिफ रास्ते खुल जाएं और आपको गाइडेंस और ट्रेनिंग मिलती रहे ऑन हाउ टू बेस्ट अप्रोच दैट.